टेक्नीशियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखें, कोई स्टेप भी मिस ना करें, और इसको फॉलो करने के बाद वो श्योरली इस चीज़ पे अपनी कमांड हासिल कर लेंगे कि किसी भी मोबाइल फ़ोन को डिसअसेंबल कैसे किया जाता है और उसका बेहतरीन तरीके से नया फोल्डर या टच स्क्रीन कैसे इंस्टॉल की जाती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान लाजमी करना कि आपने मोबाइल की प्रॉपर फिटिंग से पहले न्यू फोल्डर को टेम्परेरी तौर पर अटैच करके उसकी वर्किंग को चेक करके उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर फिटिंग करनी है, जैसे कि वीडियो में दिखाया। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्कॉच टेप का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि फ़ोन में अक्सर ऑटो टच का इशू आ जाता है और अब मैं टेप लगाकर उस चीज़ से बचत करूँगा, क्योंकि अक्सर फ़ोन के पेस्ट जो है वो मीडिया के साथ अटैच होती है तो वो ऑटो टच प्रॉब्लम क्रिएट करता है।